Good morning, Sanjeev. Good morning, everyone. Welcome to TCA Daily Current Affair with me, Subsankar Hazra, in StudyIQ platforms. So, before starting the session, today is 4th March, and we are going to start the current affair. But 4th March the current affair start kare purburu, you have the look of Pragati batch rahichi, जोटा कि OCS Prelims and Mains both ପାଇଁ ରହିବ. Foundation batch 1 2024 ପାଇଁ Pragati batch, and of course the cost would be 11,999, but use my code SHLIV to get the 2,000 more discount, so that it would be 10,000, right? चलो फिर आज हम current affair देखिबा. Apart from that, we will have other batches also, like pratham batches there for the OSSC CGLs ପାଇଁ ରହିଛି. Then there is also prarambh batch OPSC ASO 25 ପାଇଁ foundation batch. Then there is also pariksha main test series batch 2 मध्ये चलछि एबे जो माने मेंस लेखुचंती तांको ପାଇଁ. Now first topic of the day को आसीबा हमें. टॉपिक होची कोन जो इलेक्शंस. गुड मॉर्निंग मानस, कविता, मोनालिका, संजीव, एनवी, गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो फास्ट टॉपिक देख. फास्ट टॉपिक होची डुप्लीकेशन ऑफ आमे को जो वोटर नंबर बा आमे के जो जने लोक दीटा जगह वोट दियंती. तो ये टॉपिक्स इलेक्शन कमिशंस कहउचंती द ECI allays the concern over the duplication of voters number. तो ECI obviously concern देखेचंती and कहिचंती कि we are taking all the measures to address this issue. ये issue को address करे पे जहाँ दरकार सब हमें करूचे, right? That means एथरे कौन ही था केबे केबे तुम देखी थो कि जने लोक नियरेस्ट जगह से कौन करिवो भोट दे दउची तापर आ गोटे कन्स्टिट्युएंसी रे भोट दउची. तो एमती ही था. तो ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ କରାଯାଉଛି. बट एथरे कौन होता है ना किंतु कन्स्टिट्युएंसी अलग होता है. जदियो वोटर कार्ड सेम थाए बट कन्स्टिट्युएंसी वुड बी डिफरेंट. कन्स्टिट्युएंसी केबे भी हबो नहीं. तो सेम इश्यू कंसर्न देखैछन कि ममता बनर्जी आल्सो रेज द कंसर्न के जो डुप्लीकेशंस को नहीं कि से मध्ये कंसर्न जतैछंती, राइट? तो एटा को ये इश्यू को बस हम देखिबे. इसरे बेसी किछि खास नहीं. तो हम देखिबा ये रीजंस कोन काहे कि डुप्लीकेशन होउची. some electors जो माने हमें कहबा जो वोटर्स माने रहिछंती दे शेयर सेम जोटा कि इलेक्टर हमें कहबा जो वोटर आई कार्ड रो नंबर थाए सेम नंबर को शेयर करंती. बट दे आर डेमोग्राफिक डिटेल्स जदि हमें कहबा डिफरेंट ही थाए, देयर कन्स्टिट्युएंसी पोलिंग बूथ ए डिफर ही था. जदियो से माने गोटे सेम कार्ड देखांती वोट देला बेले बट तांकर बूथ स्टेशंस तांकर पोलिंग स्टेशंस ये सब अलगा ही थाए. कन्स्टिट्युएंसी एटा अलगा ही थाए, राइट? तो रीजन कौन हम देखा. देन डुप्लीकेशन रिजल्टेड फ्रॉम द डिसेंट्रलाइजेशन मैनुअल वोटर्स हम कहबा रजिस्ट्रेशन बिफोर शिफ्टिंग इनटू द दैट इज बट एरोनेट प्लेटफॉर्म. ए जो एरोनेट प्लेटफॉर्म आसी जिवो ये प्लेटफॉर्म रे कोन हिजिवो एबे सबु समस्त को कहै छै कि एरोनेट प्लेटफॉर्म रे हमें रजिस्ट्रेशन करा जिवो सो दैट आउ डुप्लीकेशन हबो नाही. सो देयर वुड बी नो डुप्लीकेशंस हम कहबा जो हमर डिसेंट्रल मैनुअल हिची. तो धीरे धीरे ताको ये करा जिवो. एरोनेट 2 आसी जाइछि जोटा कि यूनिक EPIC numbers रहबो to all the that is electors रहबो and will rectify any duplications and ensure the transparency. ए जो एरोनेट्स आसला एथरे जहा हमको चैलेंजेस देखाइतले एरोनेट 2 आसी जाइछि. बस तुमको पचरो के एरोनेट 2 कोन एटा रखबो इलेक्शन कमिशन जो डुप्लीकेशन ऑफ नंबर्स रहिछि ताको हटेया पई एरोनेट 2 आनिचंती. बस एथिक हमको दरकार, राइट? सो दैट तुम रहिजो. गुड मॉर्निंग रतिकांत, राइट? तो ये आम कह एरोनेट 2 टा खाली मन रख कि एरोनेट 2 इलेक्शन कमिशन आनी सो दैट डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स को रिमूव करिया पई, करेक्ट? नेक्स्ट इलेक्शन कमिशन कौन करछंती रिमूव करिया पई. द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हैज डन कौन कौन करछंती देखो. ये क्वेश्चंस आसी देखो जेहेतु टॉपिक इलेक्शन कमिशन रो थिला. तो ऑब्वियसली वी विल गो फॉर द व्हाट आमे जिबा MCQ पई. गुड मॉर्निंग सुश्री. ना फास्ट MCQ देखि दियो.
with reference to the Election Commission of India, consider the following statements. MCQ रे हम कहबा Election Commission को नहीं. तो questions कौन? The Elections Commission of India जदि हम कहबा, right? First option, Election Commission of India is a 5-member body. Second, Union Ministry of Home Affairs decides the election schedules for the conduct of the both general election and by-election. Third, the Election Commission resolves the dispute related to splits and merger of recognized political parties. Which of the following givens are correct? Right. So, se कहूँ which of the following givens are correct? Try करो. देखिबा. वॉल्यूम आसुनी कि एबे आसुची वॉल्यूम एबे ठीक आसुची एबे वॉल्यूम आसुची कई जने टिके चेक कर देला एबे ठीक ठाक आसुची Okay, done. So answer तमे maximum तमन को भीतर सी ही देइछो जेम देखि हम कहबा so maximum हम कहबा तमन को भीतर ताले that means हम कहबा कोन आसी तमरो सी तो सी देखिबा ताले आंसर कोन अछि इलेक्शन कमिशन इज अ 5-member body ना ये तो 3-member body so one got cancel one जेतर कैंसिल नै जबो बाकी यूनियन मिनिस्टर्स काहे कि इलेक्शन डेट को शेड्यूल करबे यूनियन मिनिस्टर तो शेड्यूल करिवे नहीं so that is why the answer would be that means हम कहबा so here would be the cancel है जो कोठा तमरो तो जदि हम देखिबा it's a 3-member body first of all it's a 3-member body so this is not 5 so this one is cancelled. Then Home Ministry of Home Affairs, no, this is ECI, Election Commission of India. So this would be ECI, Election Commission of India. So both two got wrong, and so answer is C. The right answer is C. So right answer होची तमरो C. चलो फिर next questions को जीवा. Next question UPSC Prelims 2021 रो देखो Election Commission ऊपर. The Election Commission of India is a constitutional body. ये तो समझते जानते. That means correct. The Election Commission of India is responsible for the conduct of elections to the office of President and Vice President of India. Then third, the Election Commission of India is responsible for the conduct of Panchayat and municipal elections in the state. Try करो. मु कहतली गोटे को एलिमिनेट कले बाकी आंसर बाहर जीवो जेतरो एई भले तीनटा थिबो राइट यू हैव टू एलिमिनेट वन देखो ट्राई करो ए इज मानस कहूँ ये ए संजीव ए कविता ए वाह राइट तो जदि हम देखो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट मींस ऑप्शन 1 इज करेक्ट तो ऑप्शन 1 जदि करेक्ट ताले तुमको मु कहतली यू हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग वन टू रीच द राइट वन रॉन्ग वन को देखिया बैठे प्रथम ये म्युनिसिपल इलेक्शन वगैरह करे नहीं 3 गॉट कैंसिल तो 3 जेतरो कैंसिल ही होची तो 1 इज द आंसर सो 3 जेतरो कैंसिल ही जबो तो ऑब्वियसली 1 वुड बी द आंसर कारण ये कहा को इलेक्शन करता है ये जो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तमरो को इलेक्शन करता है प्रेसिडेंट इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन राज्यसभा लोकसभा जो इलेक्शन को देखि थांती प्लस आमर असेंबली इलेक्शन को देखि थांती लोकल इलेक्शन को देखंती नाही एंड दैट इज व्हाई ऑब्वियसली आंसर वुड बी ए राइट नेक्स्ट क्वेश्चंस को जीवा हमें राइट नेक्स्ट यूपीएससी अगेंस्ट प्रीलिम्स 2017 यूपीएससी क्वेश्चन आसी इन इंडिया द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कंडक्ट इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज
and the office of the president and the vice president. Then the election commission can conduct election to the local bodies, panchayats. Obviously हम जानते आंसर कौन हबो, so that answer देखिबो. तो ताले आमे काहाकू cancel करिबा, we will cancel out what 2, the 2 will be cancel out, 2 will be cancel out, so answer would be there. तो ये तमे answer जदि देखिबो, right, the answer would be there. तो राजीव good morning. तो ये हमें आंसर देखी देले, सो आंसर वुड बी राइट. चलो फिर तो आंसर तो मिल जीवो. नेक्स्ट टॉपिक को आसीबा. द लास्ट एमसीक्यू इलेक्शन कमिशन ऊपर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्शंस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स, जदियो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स तमरो सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देई चंती, इज नॉट नो लॉन्गर, दैट मींस जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स रहिछि नो लॉन्गर एक्टिव इन इंडिया, वर्तमान ये आउ नहीं, राइट. That one is done away. Set done away हो जाइछि. So the election bonds purchased by individual as well as corporate, ये बिल्कुल ठीक. The schemes allows, that is what, anonymous donations to political parties. The bonds are that is valid indefinitely and don't have any expiry date. देखो एमती न था, is having expiry date था, तो एमती न था कि expiry date ही नहीं, तार expiry date था. तेणु करके 3 got cancelled, so 3 got cancelled and answer would be A. तो answer कौन हबो A. So this bond is, it was 2019 रे introduce हेइथिला, but शायद ये 2024 रे ही, 2023 और 2024 रे आको सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देले कि ये बॉन्ड आउ हबो नहीं, because this is what violating the free and fair election principles को violate करूची बोली सुप्रीम कोर्ट ए स्कीम को स्ट्राइक डाउन कर देछि. दैट मींस राइट एथरे किछि सेक्शंस बेनिफिट पाउछंती, दैट इज व्हाई. नेक्स्ट आसीबा हमें नेक्स्ट टॉपिक रहउछि हमर कोन, ओडिशा गवर्नमेंट्स पॉलिसीज ऑन चाइल्ड केयर प्लेसेस एट वर्क प्लेस. तो ओडिशा गवर्नमेंट कोन करिवो, पॉलिसी ऑन चाइल्ड केयर एट वर्क प्लेस. देखो चाइल्ड केयर जदि वर्क प्लेस रे न हबो, लेट्स से द मदर वुड नॉट बी एबल टू वर्क हैप्पीली. तेणु करके जदि आम कहवा कि चाइल्ड केयर एट वर्क प्लेस रहिबा बहुत जरूरी, सो दैट द चाइल्ड विल हैव मतलब he or she will have opportunity to have the love from the mother and the mother will have opportunity to take care of the child, so both will go, that means simultaneously. सेथि पई ओडिशा गवर्नमेंट फोकस कोचंदे कि हाउ the young mothers they will have opportunity to take care of the child while working in their workplace. तो ता ऊपर ओडिशा गवर्नमेंट एंश्योर करिवे जेंति कि चाइल्ड केयर पॉलिसी एंड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट aims to ensure the universal right of child from the parental at the age of 6. That means hame कहबा at the stage, that means parental age to 6 of the age, at least 6 वर्ष पई जेमति से माने केयर पाउथुवे. तो जोटा हमें सेथि पई वर्क प्लेस मानकर एटा कराछबो. तो ओडिशा गवर्नमेंट ता पई ध्यान देबे. ताले ये कोठी लागू हबो. So industries and the private organizations, especially those that employ more than 30 women having at least 10 children between 6 months and 6 children age, will have established the care center. ताले जोठी आमे कहबा 30 रु अधिक वुमेन्स काम करूछंती, चाहे से प्राइवेट हो चाहे से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो से माने चाइल्ड केयर फैसिलिटीज करिवे जोठी 30 रु अधिक वुमेन्स काम करूछंती, राइट. तो सेटा रहबो द प्रपोजल्स केयर सेंटर पॉलिसीज एम टू प्रोवाइडिंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस फॉर द सर्वाइवल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस. एंड आमे कहि परबा ये गोटे कोन हेई परबो, ऑब्वियसली वर्क जोटा आमे कहबा हैप्पी वर्क प्लेस हेई परबो मदर्स पई एज वेल, सो दैट से माने काम भी करि परबे एंड नेशनल पई मध्ये हेल्प करि परबे, जीडीपी ग्रोथ हेई परबो, देयर वुड बी, राइट. तो ये सब देखाचो नहले लीफ अधिक दिन नउचंती, तो आदर आमे कोन करबे ए माने इजीली वर्क करि परबे, सेफ भी रहि परबे और पिलाटा को मध्ये देखि परबे. तो एटा ठीक क्राइटेरिया मन रखिबो, दिस वुड बी, दैट मींस रहइबो. आ जो सेंटर्स ता आको पाकर रहइबो, एमते नै कि मदर गोटे जगह रे काम करछि हाफ किलोमीटर दूर रे केयर सेंटर रहिछि नै, सेही बिल्डिंग भीतर ही रहि परिबो, राइट. तो सेठी पय हम कहबा दिस सेंटर विल हैव, दैट इज द कैटर्स टू द चाइल्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट पर्सनल्स as well as the working women in the vicinity.
तो एटा टिके मन रखिबो राइट सो दैट हमें वर्केबल कंडीशन प्रोवाइड करूचे ताले एस्टैब्लिश करबा केयर सेंटर्स कोठी करबा बोथ एंड प्राइवेट एंड गवर्नमेंट रे कहिची advantages आम कहबा the focus on the children from the disadvantaged communities like the tribals minorities and migrants it will provide safe affordable and convenient child care ये तुमको मिलिबो implementation strategy तो ये मध्य बहुत बढ़िया रहइबो the women employees private organization जोटा कि 30 employees मु कहि देछि राइट at least 10 children's 6 months 6 year पाई must establish the child centers at least 10 टा पिला पाई रेडी करिक रखिथिबे से माने के 10 टा पिला जेमती सेठी रही परथो बा पिलार अरेंजमेंट कर परिबो देन वर्क प्लेस बेस्ड केयर सेंटर जेमती हमरो जेमती ब्रिक्स मान करे तमे देखियो जोठी इटा भाटी काम होउची हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट ऑफिस इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज ये सब जगह रे परिबो जोठी मोर देन 30s रही stand alone care center रहिबो there would be stand alone care center so that government office है गेला hospital से मन कर रही परिबो stand alone जोठी काम करिवे से पाखरे सेठी थिबो राइट early childhood care पाई परिबो feedings facilities थिबो growth and monitoring थिबो regular health check up supplementary nutrition programs age appropriate activities for the child से एरिया रे जेमति पिलाटा खेली पारुथबो राइट तो ये सब प्रकार फैसिलिटीज तांको दवको पड़ियो काको द कंपनी नीड टू मीट काना एमते नै कि पिलाटा गोटे जगह खाली गोटे घरे बसथिबो ता पई खेलिबो इकोडे काना बिकॉज़ ता एज ही सेया सो एनकरेज द वुमेन्स वर्कप्लेस पार्टिसिपेशंस बाय प्रोवाइडिंग द चाइल्ड केयर सपोर्ट सो दैट कंपनी रे मध्ये डेवलपमेंट हबो काना अदरवाइज सेही लोकटा सेम लोकटा घरे बसी पैसा नै थांता राइट ensure the proper development and health of the children हम कहबा बाकी तमरो जो constitutional provisions अछि तमे ताकू लिखि परिबो एठी constitutional provisions कोन लेट्स से हम कहबा constitution जदियो प्राइवेट कंपनी को कहा जायनी बट स्टेट को तो कहा जेठी आर्टिकल 47 कथा कहि परिबो एंड 42 कथा कहि परिबा जो मैटरनिटी हम कहि परिबा राइट ये सब तमरो हे परिबो चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू टिके हम देखि देबा तो एमसीक्यूज को आसीबा हमें यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 रे देखा द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऊपर मु एथि पे क्वेश्चन देछि बिकॉज़ आज काली बहुत डिबेट चली छी खास करी तमिलनाडु गवर्नमेंट इज शार्पली अपोजिंग टू इंप्लीमेंट द एनईपी 2020 and that is why there is a hue and cry among the southern state the language debate is again activated in India मतलब देखो देश आगो को जीवो कि नहीं सेटा चिंता नहीं बट देयर इज ए व्हाट डिबेट ऑफ लैंग्वेज कंजर्वेशन मतलब लैंग्वेज को नहीं की देखो लैंग्वेज तो रहिबो समस्त एटा डिपेंड्स करे लोकों को ऊपर एंड पीपल्स विल आल्सो कंजर्व करिवे समति लोकों को ऑब्वियसली इंपोज तो करा जीवा कथा नुह अदरवाइज लैंग्वेज कने लैंग्वेज रिपोर्ट भी जदी तमे देखिबो लास्ट 50 इयर्स रे जदी हम देखिबा इंडिया हैज लॉस्ट सो मेनी ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज तो तार सेंसस भी जदी तुम देखो दैट इज वाई को नहीं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड दैट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जोटा कि हमर मदर टंग रे हवा दरकार एटलीस्ट 5 क्लास चाहिए द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फासाइज अर्ली चाइल्डहुड केयर राइट 3 to 8 हम देखिथिले तो ऑब्वियसली एटा तो मदर टंग रे रहिबो कारण से जल्दी सिखि परिबो पिलाटा तो सेटा रहिबो प्लस ये मध्य रहिबो कारण हम देखिथिले 5 3 3 4 आमे देखिथिले कोन 5 3 3 4 आमे देखिथिले अप्रोच थिला सो बोथ वुड बी द आंसर वुड बी व्हाट बोथ द आंसर कोन रहबो तमरो बोथ यस आंसर वुड बी बोथ जेमति संजीव देछि हला आंसर वुड बी बोथ दैट मींस इट वुड बी बोथ राइट इट वुड बी बोथ हमको रहबो तण करके ये आंसर विल बी बोथ राइट आंसर विल बी बोथ कारण एनईपी बहुत डिबेट रे चली तेणु तुम मैंने पढ़ा कथा एनईपी को पढ़ बाकी रहा देख 2 लैंग्वेज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ऑलरेडी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला रही इंग्लिश हम हिंदी हम गोटे लोकल लैंग्वेज तो आमर जो एनईपी रही एथरे 3टा लैंग्वेज ऑलरेडी रही बट सदर्न स्टेट कहवा कथा के हिंदी रहिबो नाही ओनली देयर वुड बी 2 लैंग्वेज इंग्लिश एंड तमिल बुझबो इंग्लिश एंड
तमिल मो कहा कथा कि जदि तमे हिंदी को भी अपोज करूछ ताले इंग्लिश को भी अपोज करो कि हमर एठी इंग्लिश भी चलिबनी खाली तमिल चलिबो सेटा गोटे हाँ सुनिले भल लागंता कि हम जानि थांते कि माने खाली निज लैंग्वेज छडा आउ कोनसे लैंग्वेज को माने श्रेय दवा पई चाहू नांती ये गोटे आम कह फॉरेन लैंग्वेज को गोटे आम अपनाऊचे कि इंग्लिश कहबो तमिलनाडु लोक बट से माने हिंदी पिला जानबे नहीं लैंग्वेज होची गोटे स्किल बुझिबो कि नहीं जदि फॉर एग्जांपल नाउ डेज इफ यू आर नॉट एबल टू इवन लेट्स से हमें हिंदी कथा नहीं जाओ यूपीएससी रो मैक्सिमम जोठी कोचिंग देखबो हिंदी कंटेंट मतलब कंटेंट इंग्लिश रे मिलिबो बट जो लैंग्वेज रे पढ़ांती तो बेसिकली सो दैट विल गिव द एज टू द एस्पिरेंट्स कि से माने बुझी परबे तो बिंग सेटा हमको रहिबो तो हमें 3 लैंग्वेज फार्मूला इज राइट बाकी समस्त लैंग्वेज समस्त कंजर्व करियर राइट अछि कहिबर राइट अछि सेथरे कोनोसी ऑब्जेक्शन नाही कि ना से माने तमिल कहबेनी हिंदी कहबे सेमती तो कहा जाऊ नाही देयर इज नो इंपोजिशन देयर इज ओनली ए अनदर लैंग्वेज दैट एवरीबॉडी शुड नो सो दैट हमको गवर्नेंस रे गुड गवर्नेंस हे परिबो दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन जाके हमें कहबा राइट नेशनल इंटीग्रेशन आधार छाड़ी के जाइतले बुझि बचन ने सरदार पटेल जी जहाँ को मोदी जी कंप्लीट करूछंती ताई से आर्टिकल 370 कथा नहीं जाओ चाहे से वन नेशन वन इलेक्शन कथा नहीं जाओ चाहे से वन नेशन वन वोटर कथा नहीं जाओ वन नेशन वन राशन कार्ड कथा नहीं जाओ यूसीसी कथा नहीं जाओ सो दिस आर द मॉडर्न डे नेशनल इंटीग्रेशन यदि तुमको पचारे कि मॉडर्न डे नेशनल इंटीग्रेशन रो मीनिंग कौन द मॉडर्न डे नेशनल इंटीग्रेशन होची कि आमे जेएनके को आमे कंप्लीट कले देन वी हैव बट जमती कहले वन नेशन वन इलेक्शन वन नेशन वन वोटर वन नेशन वन आधार वन नेशन वन राशन कार्ड यूसीसी वन नेशन वन यूसीसी कथा भाबो भी सो दिस वुड बी द मॉडल डे आमे कहबा नेशनल इंटीग्रेशन राइट चलो फिर हमें देखिबा नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राइट टू एजुकेशन एक्ट ये 19 रे थिला ये वाला तो आसीबो नहीं अच्छा राइट टू एजुकेशन देखि दबा में ठीक इट प्रोवाइड्स ए आसीबो कना एटा राइट टू एजुकेशन सॉरी अच्छा मते कई जन कमेंट करी कहि दियो राइट टू एजुकेशन व्हिच अमेंडमेंट रे आसीथिला in which amendment the right to education was added into the Indian constitutions as the part of DPSP इकोथ्री add ହେଇଛି in the part of DPSP ये तो DPSP रे add ହେଇଛି again it's a fundamental right 21A again it's a fundamental right 21A रे भी अछि that's a what हाँ चलो फिर तो ऑप्शन देखो इट्स प्रोवाइड्स द एज ये तो फ्री एंड कंपलसरी रहिबो 25% रिजर्वेशंस बिलोंग्स टू द सोशियो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पाई बोथ गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल विदाउट एनी एक्सेप्शंस अप्लाइज रहिबो राइट तो ऑप्शन कोन हबो देखो ताले आंसर कोन हबो व्हाट वुड बी द आंसर '86 अमेंडमेंट ओके फंडामेंटल राइट के थे 21A फंडामेंटल राइट कौन 86 अमेंडमेंट 21A एंड आल्सो फंडामेंटल ड्यूटीज मध्य एंड आल्सो फंडामेंटल ड्यूटीज सो इट्स व्हाट A and as option is A it applies both private and government school without exception ना with exception रहिबो राइट ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट ही जाउची विदाउट एक्सेप्शन कारण जो प्राइवेट स्कूल रही से कंप्लीटली प्राइवेट हो पारे बा गवर्नमेंट किसी एड दे पारंती तो डिफरेंट मॉडल्स रही सेमती नेक्स्ट जा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन रो ऑब्जेक्टिव कौन टू इम्प्रूव द मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन टू इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन टू रिड्यूस स्टंटिंग undernutrition and anemia among the children यदि हम देखिबा to reduce what stunting malnutrition undernutrition anemia among the children and women because anemia तो बहुत anemia रा टारगेट केते होची 47 केते 47 ना कि we will finish the anemia in India
47 शायद के गोटे कमेंट कर दियो देखिबा टू प्रोवाइड द फ्री स्कूल्स मील्स टू ऑल द चिल्ड्रंस अप टू क्लास 10 आजिकल तो आमर जो मिड डे मील के भेगला 9 आउ 10 पिला को मते दिया जो ओडिसा रे हम डिस्कस करथले एक दिया जिवो 9 एंड 10 पिला आगरु थेला मिड डे मील केते 8 क्लास जाय थिला एबे माझी गवर्नमेंट डिक्लेयर कले कि मिड डे मील्स 9 and 10 students they will also avail and the egg will be also distributed as the part of the mid day meal scheme से कहूँ टू इम्प्रूव आम जदि कहवा ताली जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कौन टू इम्प्रूव द मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन रिड्यूस द स्टंटिंग वगैरह कहवा फ्री स्कूल्स मील्स अप टू द चिल्ड्रन अप टू 10 क्लास देखिबा आंसर दिया डी 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 अप टू 10 तो एबे हेची बाकी मैंने ट्राई करो बाकी मैंने देखो देखिए ये तो ठीक अच्छे 1 and 2 तो ठीक अच्छे बाकी 3 टा डाउट लगुच यस सो 3 इज द रॉन्ग कहना एबे 10 तो ओडिशा गवर्नमेंट एबे करछन्ते ना एटा नेशनल गवर्नमेंट थोड़ी कर देछि तो दैट इज व्हाई 3 गॉट कैंसल एंड ए इज द राइट आंसर सो ए इज द राइट आंसर कहना सेथि मु कहली ना तुमको तो जोठी डाउट लागिवो जानो से हबो कि नै देन अवलांस ऑब्वियसली हम ये इशू को देखि थिले अवलांस इशू को देखिचे एंड अवलांस इशू को मु सेथरे मध्ये कहितली कि अवलांस इशू जो बीआर और जो वर्कर्स माने अछंते कि 55 वर्कर्स दे ट्रैप्ड दे आर इन चामोली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड दैट इज ऑन द बैक ऑफ बद्रीनाथ टेंपल्स हम कहबा जो ग्लेशियर्स रही छी द पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय हम कहबा तो माना विलेज हम डिस्कस करथिले माना विलेज द लास्ट विलेज उत्तराखंड रो कहा जाए एंड बट लास्ट नुह बट दैट इज द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया तार ना चेंज करी कोन करही छी द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया बोली तार कराई छी एथरे एबे कोन कहि छी उत्तराखंड जो अवलांस रे कि 8 वर्कर्स इज बीन डाइड 8 जन को डेथ हेछि बिकॉज़ ऑफ हमें देखिथिले ना कि जाकू कहा जाए हिमस्खलन जाकू कोन कहा जाए हिमस्खलन राइट हिमस्खलन बा आमे कहबा आइस जो बरफ अतडा खसिबा जाको हिमस्खलन बोली कहा जाए अवलांस that has struck the camp and the peoples were trapped there many of them is been rescued obviously unfortunately the 8 is been died तो जेहेतु डेथ obviously एते -40 -30 डिग्री टेम्परेचर टॉलरेट करे पुनी एते सब बोल्डर्स वगैरह से की that would be difficult right तो यार ऊपर में देखितले डेथ टोल has raised to 8 and survived केते कछ 46 survives बाकी ये डेटा is not needed तो दैट मीन्स हम के डिक्रीज वर्कर्स तो साधारणतः हम जो वर्कर्स माने आसुंते तो ये सॉरी डिसीज्ड वर्कर माने जो मन को डेथ हेछि तो से मन को डेटा दिहेछि द डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड चलो फिर ना रिजर्वेशन रे जो हमर प्रमोशन रे भी रिजर्वेशन अछि ए कथा भी जानि छ आज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस रे कोन कहबे सुप्रीम कोर्ट कहते देखो दैट तुमको पछारे कोन प्रमोशन रिजर्वेशन अछि कि एस there is also reservation in promotion but से जो promotion को basis रे हबो that promotion also on the basis of number तांकर number को नै कि एमति नै कि जेते एससी एसटी छथि समस्त promoted हे जबे ना समस्त हे परिबनी only on the basis of number अर्थात जेमिति हमें गोटे एग्जाम दउचे कोन होची सपोज एग्जाम रे एतिकी पोस्ट रिजर्व रहला एससी पे एसटी पे ओबीसी पे अमको पे वुमेन पे रहला कि नै तो सही बेसिस रे सेमिति जेतेबेले प्रमोशन भी हबो डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन होउची दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर नहले तो खाली से माने ही प्रमोशन पाइबे बाकी माने पाइबे नहीं तो ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट देइछंती किंतु ओडिशा गवर्नमेंट आ पूर्वरु जेते नवीन बाबू थिले सेतेबेले बिना नंबरिंग रे बिना कैलकुलेशन रे प्रमोशन दिया जाइछि जोटा कि एबे सुप्रीम कोर्ट कहछंती कि नाही सेमिति ही परिबनी फास्ट कैलकुलेशन हबो केते एक्चुअली से माने काम करूछंती सेमनकर संख्या केथे सेही बेसिस रे हमें ताकू कोन करबा प्रमोशन को नेबा सेतमे ओडिशा गवर्नमेंट एबे कोन करूछंती तो जोटा तुम देखि पारो द ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड ऑल द डिपार्टमेंट्स to follow the Supreme Court guidelines on the reservation in promotion for the scheduled caste
and scheduled tribes. This follows the principles adopted by the DOPT, Department of Personnel and Training, Ministry of Personnels, the Public Grievances, and that is the pensions. तो से मुझे तुमको बुझेदेली कि केमती करा the numbers will be calculated करा then according to the guidelines जो Supreme Court guideline देइछन्ती कोन कि first you have to calculate करबो and on the basis of that there would be कहबा में कोन promotion will be given, right? The promotion will be given on the basis of that. जीवा फिर एती खाली मन रखो कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस देइछन्ती जो प्रमोशन हुए कि नहीं, यस हुए को बेसिस रे सुप्रीम कोर्ट कोन कहछन्ती कि सेमानकर आगे नंबर को आइडेंटिफाई करो सही बेसिस रे हमें करबा ना. हियर इज द ना इथरे कोन क्वांटिफिकेशन जोडा मु तुम कहली सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स ऑन रिजर्वेशन इन प्रमोशन. सुप्रीम कोर्ट्स प्रमोशन शुड बी बेस्ड ऑन क्वांटिफाइबल डेटा, राइट? जोटा मु तुम कहली डेटा को आनो से डेटा बेसिस रे एसटीज एंड एससीज मन को प्रमोट कराचिबो इन द डिफरेंट सर्विस कैडेट्स रे कराचिबो. द प्रोपोर्शनेट स्ट्रेंथ को रहिबो जो प्रोपोर्शनेट रहिबो एमति नाही कि जने गोटे सेक्शन अधिक प्रमोशन पाइबो आ गोटे सेक्शन अधिक प्रमोशन पाइबो नाही. प्रोपोर्शनेटली अर्थात प्रोपोर्शनेटली मीनिंग कोन कि भाबो लेट्स से गोटे ऑफिस रे 100 जण काम करछन्ती बा ए वर्ष 100 जण प्रमोट हेबे बा प्रमोशन हबो 100 जण कर 100 जण को भितरु ऑफिस रे 100 जण अछंती सेथरे हम देखले 5 जण एसटीज अछंती 10 जण एससीज अछंती एंड वुमेन्स अछंती जनरल अछंती एमको अछि. नाउ एबे सपोज प्रमोशन करियर अछि मते 20 जण को प्रमोशन करियर अछि. सो दैट वुड बी प्रोपोर्शनेट अर्थात जो मन को संख्या कम सेमान को प्रमोशन भी संख्या भी कम होबो प्रोपोर्शनेटली. जदि जनरल्स मानकर जदि हम देखो आउट ऑफ 100 70% जाते जनरल तो 60% मिनिमम तो रहइबो जनरल्स बा 50% तो मिनरल जनरल रहला तो 50% ताले 50% प्रमोशन भी से माने पाइबे बाकी 50% डिस्ट्रीब्यूट हबो तो सेटा कोन रहबो प्रोपोर्शनेटली हबो, राइट? एटा प्रोपोर्शनेटली हबो एंड दैट इज व्हाई कि ओडिशा गवर्नमेंट न्यू गाइडलाइन अनुसार करबे सेटा प्रोपोर्शनेटली हबो. बुझा पड़ियो समस्त को. गुड मॉर्निंग मधुस्मिता. हे परिबो ना नेक्स्ट टाइम जीवा किंतु प्रीवियस गवर्नमेंट जोटा करथिले सेटा सेमति किछि डेटा कलेक्शन कर नथिले विदाउट सच ए सर्वे बिना सर्वे रे गवर्नमेंट कोन करथिले प्रमोशन करथिले. नेक्स्ट आसीबा इशू कोन इशू होछि डिलिमिटेशन दैट इज रेफरेंस टर्म्स मस्ट बी साउंड टू एडजस्ट टू द साउथ. से कहछि डिलिमिटेशन reference terms must be sound to do adjust to the south. एबे सदर्न स्टेट्स मानकर असुविधा कोन होछि टिके हम देखिबा. सदर्न स्टेट मतलब लाइक हम कहबा तमिलनाडु केरला तेलंगाना दे आर साउंडिंग बा से माने आवाज उठाउचंती कि जदी डिलिमिटेशन हबो डिलिमिटेशन कले समस्त बुझी परिबो rearrangement of assemblies, rearrangement of MPs, right? ताहाले सेमान को संख्या कमी जिवो तांकर फियर होउची सेमानकर डर हैला कि जदी डिलिमिटेशन 2026 परे हुए कारण डिलिमिटेशन 2026 परे हबो कॉन्स्टिट्यूशन रे कहैछि 2026 परे डिलिमिटेशन हबो. अच्छा जदी 26 परे डिलिमिटेशन हबो ताले डिलिमिटेशन जदी हैला माइट बी जो हमर सदर्न स्टेट अछि सेमानकर संख्या कमी जाय पारे आ जदी सेमानकर संख्या कमी जाए देन इट वुड बी डिफिकल्ट अर्थात सेमाने कहउचंदी कि नॉर्दर्न बेल्ट will dominate on us in terms of the political sphere. So in fear of the losing of the seat MP seat semane protest କରୁଛନ୍ତି कि we would not allow to have the delimitations. So central government कहया कथा कि we will have arrangement and ensure that the southern state would not lose the seat. Right, we will have an arrangement करा जिवो so that आमे कहबा कारण जदि आमे देखिबा ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ कोठी अधिक होची बिहार पॉपुलेशन ग्रोथ कोठी होची यूपी तण करके मन को एमपी सीट आउरी बढ़िबो आ जदि एमपी सीट एपटे बढ़िबो सेपटे कमिबो राइट कारण हमर मैक्सिमम केते हेई परिबो 552 ताठू अधिक हेई परिबोनी मैक्सिमम केते हेई परिबो 552 हां कि नहीं सो एबे अछि केते तमरो 545
ए भी कते अछि 545 तो सेति की अछि अच्छा 550 हबो नै ओके तो टू एंग्लो इंडियंस जोटे रिमूव कराई जाइछि ताल जदि 550 होची बर्तन अछि 545 राइट सो दैट आ पांचटा तो इंक्रीज करी हबो एमिति भी पॉपुलेशन बढ़ेले किंतु आउ गोटे कोठी कमीबा दरकार ताकि आमे कहबा ई इश्यूज आसी पहुंची छी ताल ये केउथरे हबो डिलिमिटेशन मीनिंग कोन एक्ट ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अछि सपोज गोटे एमएलए रो तार गोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी अछि गोटे एमपी रो गोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी रही छी सो एंड दैट इज व्हाई के डिलिमिटेशन लिटरली मीनिंग होची फिक्सिंग द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी गोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी रो बाउंड्री को फिक्स करबा कोन करबा हमें बाउंड्री को फिक्स करबा को आर्टिकल्स आर्टिकल 82 आर्टिकल 82 of the constitution parliament enacts a delimitation act every census which establish a that is delimitation commissions the main task of the commissions is to drawings that is the redrawing the boundaries of the various assemblies and the Lok Sabha constituencies to ensure the equitable population distribution right ये से पई करा जाय था किंतु आज ऑफ नाउ हमर जो फ्रीजिंग टा रही छी तो जेटा देखिबो डिलिमिटेशन कमिशन हैज बीन सेट अप 4 टाइम्स केबे केबे हेची देखो जेमति तमरो हेची 1952 62 72 एंड 2002 रे करा जाय छी द नेक्स्ट विल बी 2026 रे रहिबो 2026 परे एटा रहबो तुम देखो 2026 जोटा लिखि दैछि वाज अमेंडमेंट टू फ्रीज द डिलिमिटेशन टिल 2026 जाय फिक्स है कि अछि आ परे तमरो डिलिमिटेशन हे परे सेति में डिबेट टा एबेठु उठुछि काने हम 2025 रे अछि एंड दैट इज व्हाई डिबेट आसीबा एबे स्टार्ट हे गलानी कारण या ऊपर मध्य क्वेश्चन आसी परि यूपीएससी प्रीलिम्स रे जेतु डिबेट चली छि पॉलिटी रे जदी हम क्वेश्चन को जिबा जेतु डिबेट चली छि तो या ऊपर क्वेश्चन आसीबार चांसेस थाई पारे नेक्स्ट द घोस्ट मिशन घोस्ट मिशन कोन या ना होची घोस्ट मिशन 1 ये तुम देखि परिबो ए जो मिशन ए जो स्पेस क्राफ्ट देखि परिबो दिस स्पेस क्राफ्ट रो ना होची घोस्ट मिशन 1 ये किए करूची ये गोटे प्राइवेट कंपनी करूची यूएस र गोटे प्राइवेट कंपनी जार ना होची फायरफ्लाई एरोस्पेस जार ना होची फायरफ्लाई एरोस्पेस ये जो फायरफ्लाई एरोस्पेस रे प्राइवेट कंपनी गोटे यूएस र जे कि तार लैंडिंग करिची हमर कोठी लूनार सरफेस रे मून रो को स्फीयर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स को तो लैंड करैछि कोन जो दैट मींस हम कहबा घोस्ट मिशन 1 तो जदि तुम पचर घोस्ट मिशन 1 रिसेंटली न्यूज रे थिला कोन पई इट वाज फॉर द मून्स पई की करथले इस प्राइवेट कंपनी जा ना होची फायरफ्लाई यूएस रो ठीक तो ये टच करिछि दैट इज द ईस्टर्न टाइम यूएस रो हम देखे यूएस रो टाइम अनुसार गोटे देइछि से दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बट हम एति मन रखि परबा द फास्ट प्राइवेट लूनार लैंडिंग ये होची फास्ट प्राइवेट लूनार लैंडिंग इन मून सरफेस हम कहि परिबा ऐसे स्टेबल कंडीशन रे अछि वर्तमान एंड अपराइट भी अछि स्टेबल और अपराइट भी अछि राइट it is second private mission sorry mate correct कर दियो it's a second private mission to achieve the lunar landing fast missions जोटा कि फास्ट किंतु प्राइवेट आम कहीपर मिशन टू अपराइट जोटा कि आम कह लैंड अपराइट किंतु बाकी गुड़ा केतरे माने सक्सेसफुल न होते पारे बट मिशन ऑस्टिन टेक्सास यूएसए रु कछि कंट्रोल रूम तो एटा करिछि तमे देखि परिबो बाकी या पर एते डिटेल दिबन कारण एटा प्राइवेट कंपनी रो एटा नासा रो नु नासा रहिथिले मैं डिटेल को जाई थांते कारण देखो जेतर प्राइवेट कंपनी इंडिया रो जदी हबो ताले सिग्निफिकेंस हे जबो तो जति एटा इंडिया रही था ना टिके सिग्निफिकेंस ही था कारण लूनार सरफेस को जाउची प्राइवेट कंपनी देन हम कहवा इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट अलोंग द बुलेट ट्रेन रूट देखा बुलेट ट्रेन रूट कोठी करा जो अहमदाबाद रो बॉम्बे समस्त जानचे अहमदाबाद रो बॉम्बे बुलेट ट्रेन रहिबो का सहित मिसिकी आम करूचे जापान सहित मिसिकी करूचे राइट का सहित करूचे जापान सहित ये कथा तो समस्त जानथिबो कि जापान सहित आम मिसिकी करूचे दिस बुलेट ट्रेन विथ आम जापान सहित करूचे ना जापान सहित जो ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आमर चली व्हाट वुड बी द बेनिफिट कौन रहिबो प्रथम कथा तो देख सो दैट इज रीसेपिंग द ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स ऑफ इंडिया ताले हम कहबा रीसेपिंग द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस ऑफ इंडिया
रिसेप्ट करिवा डिफरेंट मोड ओपन करिवा फास्ट करिवा को कारण चाइना भलिया कथा नहीं जो जापान कथा नहीं जो एमान करो यदि देखिबा ना दे आर हैविंग व्हाट रोबस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो सेथ पे इंडिया विल आल्सो ट्राई टू हैव द रोबस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम so to have that robust आम कहबा ट्रांसपोर्टेशंस सेथ पे आम कहबा साबरमती टू स्टार्ट हो तमरो then it will comes to Ahmedabad Anant right हे आनंद कौन पे फेमस बोली कही थिले हमें कौन पे पढ़िथिले आनंद हां आनंद कोऑपरेटिव सोसाइटी आउ कोन कमेंट करी को कौन पे ए फेमस कौन पे कही थिले मु A small towns of Gujarat called Anant is famous for the surrogacy capital of India. Is a what? Surrogacy capitals of India. कौन होइथिली शायद कहिथिली मन थिबो गुड मॉर्निंग लिमु surrogacy capital कहि नथिली इट्स अ व्हाट surrogacy capitals of India शायद जदि कहार मन थिबो so that is the Anant then Varodara Varuj Surat then आसबो तमरो what Bilimora Vapi and Bhira then Thane Mumbai तो ये आसबो तमरो कोन थाने एंड मुंबई सो दिस इज द बुलेट ट्रेन्स हम देखि परिबा सो रीसेपिंग दिस रीजन ये रीजन को रीसेप करिवो एंड हम कहबा ये मेट्रोपॉलिटन रीजन जा को हम कहबा इट्स अ व्हाट मेट्रोपॉलिटन रीजन रे पूरा कन्वर्ट हे गेला एंड कनेक्टेड मध्ये हे गेला जेहेतु कनेक्टेड हे जाउची सो इकोनॉमिक ग्रोथ आउरी अधिक हो बैठी सो देयर वुड बी मोर इकोनॉमिक ग्रोथ काना ये रीजन रे आउरी इन्वेस्टमेंट आसीबो बिकॉज़ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज इंप्रूविंग राइट तणु ये रीजन रे जते इन्वेस्टमेंट आसीबो ताले एफडीआई मध्ये एठी अधिक आसीबो ऑल द इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी हैपेंस टू दिस रीजन राइट रादर देन द रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया सो द प्रायोरिटी विल बी गिवन बाय इवन काली मु गोटे न्यूज रे देखुतली द कंपनीज दोज हु आर शिफ्टिंग देयर हेडक्वार्टर फ्रॉम कोलकाता टू बेंगलुरु दे आर गेटिंग 50% मोर रेवेन्यू सो दैट इज व्हाई देयर इज व्हाट एग्लोमरेशन फैक्टर इज गोइंग ऑन इन द बेंगलुरु सो बेंगलुरु रे जदि हम कहबा कि majority of the IT companies across the India and world they are shifting their headquarters to Bangalore को headquarters shift करूची and now they are many of them are thinking to have the Pune next रहबो पुणे तो पुणे रहबो तो next IT hub होबो after Bangalore जदि कहबा तो ये जदि हमें इश्यूज देखबा या द्वारा ये तमे बुलेट ट्रेन्स कथा कहि परिबो जोटा हमें डिस्टेंस को कमेइबो ऐसे 508 किलोमीटर जो डिस्टेंस होची बॉम्बे एंड अहमदाबाद भितरे आपको ओनली 2 to 3 आवर्स रे पहुंचाई देबो तुमको राइट तो आपको हम देखि परबो ये तो रूट दिया है छी दैट विल 6 मेजर सिटीज 5 to 6 मेजर सिटीज को कनेक्ट करिवो एंड ऑब्वियसली हम कहबा दैट विल के ट्रैवल टाइम को कम करेबो ट्रैवल टाइम कम करिले कोन हबो 2 to 3 आवर्स रे जन जदी पहुंचुची तो से अहमदाबाद रु बॉम्बे रे काहे कि आउ घर भडा नै कि रहबे ते कॉस्टली अहमदाबाद रे ही रहि जिवो बॉम्बे आसीबो अप डाउन कर दबो राइट दैट विल बी देयर तो एटा हम कहदो एस्टिमेशन देखो 1 to 2 लाख जॉब क्रिएट हबो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आसीबे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ये सब आसी जिबे जगह रे राइट तनु कर ये जगह में कहबा 5x टाइम्स रो ग्रोथ हबो सो दैट मींस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द बिजनेस एक्टिविटीज अलोंग द रूट 5x 5 टाइम्स अधिक हो जिवो 5 टाइम्स विल बी मोर तो ये रीजन रे इनकम ता कोन जो तुरंत बूस्ट कर जो ऑब्वियसली एटा हुएन की सपोज तुम देखियो तुम गाँ साइड गोटे रोड गला तुरंत देखो वैल्यू बढ़ी जाए एसेट्स रो वैल्यू बढ़ी जाए राइट सो दैट विल आल्सो हैपेंस टू दिस रीजन्स नेक्स्ट हम जीवा द कंपेयरिंग्स विद द जापान्स शिंकानसेन मॉडल सिमिलर अप्रोच जापान्स फास्ट बुलेट ट्रेन्स ओसाका एंड टोक्यो कॉरिडोर लेड टू द मेजर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हेची सेथ में ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करा जाउची द की इंपैक्ट्स फॉर सिटीज लाइक सूरत थाने Vapi there will be आम कहबा ये इम्पैक्ट पड़िबो एंड इट वुड बी लाइक ए agglomerated urban region रे कन्वर्ट हेइछो जहा को हमें कोन कहिथो कॉन एग्लोमरेशन बोली कहू ताको हमें कोन कहिथो कॉन एग्लोमरेशन तो ताको कहते तो इट विल हैव इफेक्ट ऑफ कॉन एग्लोमरेशन अर्थात व्हेन आई से कॉन एग्लोमरेटर
कौन एग्लोमेरेशन मीन्स दी तीनटा बड़ सहर मिसी जिवा जेमती आमे कहूचे कि आमर बजेट रे वर्ष माझी गवर्नमेंट कही कि पारादीप कटक भुवनेश्वर एंड पुरी विल बी व्हाट इट लार्ज और ह्यूज मेट्रोपॉलिटन रीजन रे कन्वर्ट हो बोली प्लानिंग करा जाइछि तो सेमिति दिस इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू ए ह्यूज मेट्रोपॉलिटन रीजन रे ऑलमोस्ट कवर हो गला नेक्स्ट नाउ नो शंख साउंड एट बद्रीनाथ ड्यू टू द एवलांच फियर मतलब शंख फुंका हबो नाही ताले कोन शंख फुंका हबो नाही कोठी बद्रीनाथ रे बिकॉज हिंदू ट्रेडिशंस रे या अछि कि गुड मॉर्निंग मिली कि हिंदू ट्रेडिशन रे हमर या अछि कि शंखटा पूजा हेले शंखटा बाजिबो मतलब कहा जाए इट्स अबाउट द सैक्रेड साउंड द वाइब्रेशन क्रिएट दैट प्यूरिफाइज द सोल बोली कहा जाए एंड दैट इज व्हाई बट हियर इज अ डिफरेंट केस एंड हियर इज द डिफरेंट सिनेरियो हियर इन बद्रीनाथ सो बद्रीनाथ रे कोन होईची कि देखो जेतबेले तुमको क्वेश्चन पचर के बद्रीनाथ वेदर बद्रीनाथ इज द पार्ट ऑफ चार धाम yes is a part of चार धाम but it's a part of चार धाम of Uttarakhand Badrinath Kedarnath Gangotri and Yamunotri these are the part of the four चार धाम of Uttarakhand को कहा one of the sacred land of India and these peoples have banned तमे जानचो एठी जो वाइन्स वगैरह बैन था intoxication is banned in Gujarat as well too गुजरात रे बट ये तुम जदि देखिबो ए जो बद्रीनाथ रही रिसेंटली देयर वाज एवलांच तो शंख कहीं बाजिबनी लोकल लोक माने कहते हैविंग साइंटिफिक रीजन कौन कि शंखर जो ध्वनि रे दैट्स द साउंड व्हिच इज कम आउट फ्रॉम द शंख दैट विल क्रिएट वाइब्रेट एंड मे कॉज द एवलांच आउरी अधिक फॉल हेई पारे सेतमे एवलांच फॉल्स को रोकिया पई सो देयर इज बीन स्टॉप ऑफ द शंख साउंड हियर इन बद्रीनाथ के बद्रीनाथ रे जो शंखर जो साउंड को स्टॉप करा जाइछि एज ऑफ नाउ के शंख फुंका हबो नाही ए कथा किए कहउछंती लोकल पीपल्स लोकल लोक मध्य सपोर्ट करूछंती से माने भी बिलीव करंती कि ये शंख फुंकिले एवलांच अधिक हुए सेतपई मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज को ध्यान दिया जाए सबुठ आश्चर्य कथा ये एवलांच रे गोटी भी सेठिकार लोक मरि नाहंती सबुठ आश्चर्य कथा देखो जो जति कि 8 जन लोक मरिछंती आज हमें देखिले कि आउट ऑफ दैट 55 राइट अनऑथराइज जणे थिले तो 56 बोली कहा जाउची नंबर जो 8 जन लोक मरिछंती ये कैंप ऊपर कोन हैला एवलांच फॉल ऑन द कैंप ऑफ बीआरओ वर्कर्स कैंप ऊपर पड़ी गला किंतु से एरिया रे जो विलेज रे लोक मन रहउछन से माने मर नाहते तुमको कोन पई बिकॉज ऑफ दैट ट्रेडिशनल नॉलेज से माने जानि छंती ए टाइम रे एवलांच होबो तो घर छाडी से माने पळांते किछि दिन पई तापर पुनी रिटर्न करंती तो से माने जेतरो शीत दिन आसे वैली रे तळु को पळांती तापर खरा दिन आसले पुनी आउथरे ऊपर को आसीबो तो सीजनल माइग्रेशन करंती बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेनन तो जानी से एठी एवलांच होबो बोली से माने तो ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज इज सेविंग द पीपल्स ऑफ दिस रीजन माना विलेज एरिया चलो फिर आगु बुझिबा बाकी मु तुम कहि दैछि इस रिचुअल सही थाए एसोसिएटेड विथ द लॉर्ड विष्णु इन बद्रीनाथ द कुंज सेल इज यूज्ड जाको में शंख बोली कहा जाउछे अभिषेक रिचुअल हेई थाए अभिषेक हेई थाए सैंक्टिफाई ऑफरिंग टू द डेटी किंतु आजिकल सेटा टिके बंद पड़िकी रही एथि बिकॉज ऑफ द ट्रिगर्स द एवलांच ये कथा हमें डिस्कस करतले ह्यूमन एक्टिविटीज वाइब्रेशंस ये सब हेले कोन हबो एनवायरनमेंट ऊपर इंपैक्ट पड़िबो तेणु करके ये तार जो स्टेबिलिटी ऊपर इंपैक्ट पड़को तेणु से लॉस ऑफ लाइफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ये सब हेई परिबो सेथि पय आपको बंद करके रखा दैछि नेक्स्ट टॉपिक एसबा में नेक्स्ट टॉपिक so that is why traditional knowledge is very important देखो से माने केबे भी एवलांच द्वारा तांकर खेती हेइनी आजि जाय बिकॉज दे अवेयर से जानि छथि ये तो हुए हबो त माने देखि कि जानि दियंती कि एटा एवलांच आसीबो कि नहीं तो बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल्स अमाउंट ऑफ स्नोफॉल्स कंडीशन अच्छा जा भी हो वंस इन अ जनरेशन मूवमेंट्स फॉर द यूरोप्स सिक्योरिटी यूके देखो वंस इन अ जनरेशन से कोन कहउछंती ना ये इशू कोन जदि फोटो रे देखिबो तमे तीन जण लोक देखा जाउछंती the Prime Minister of UK, then Zelensky, then Amikaba, what the France Prime Minister as well, Macron. So these are the three people is there and they are discussing. That means the President Zelensky, Prime Minister Starmer, and French President Emmanuel Macron. तो ये तीन जन डिस्कस करूछंती कि what would be the course of action कि कौन करा जिवो यूक्रेन रो व्हाट
सिचुएशन कौन हम कौन यूक्रेन सरेंडर करदेव कौन आम पीस सेटलमेंट करदे कौन कर डिबेट चलती ना तुमको ये डिबेट तो आगुरी चललानी एबे कहीं चलती देख आगुरी जितेबले जो बाइडेन टाइम रे स्टार्ट हैला यूक्रेन क्राइसिस आउ से यूक्रेन क्राइसिस एते हैला दैट एनगल्फ द होल यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन आज पर्यंत जदि यूक्रेन तिष्ठी बा वार करूछंती बिकॉज ऑफ द फंडिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए बट डोनाल्ड ट्रम्प आसीबा परठू से कहूची मु से फंडिंग देबी नाही बा से वार सेटलमेंट कर दियो राइट रशिया सहित हाथ मिलई दबा बुझिपारछ नहीं जोटा कि बाकी यूरोपियन लीडर माने चाहूना यूरोपियन लीडर्स जमती यूके पसंद करूनी डोनाल्ड ट्रम्प रो ये मैसेज को यूके कहूचे ना एमती हेई परिबनी देन तमरो मैक्रोन कहूचे एमती हेई परिबनी इवन फिनलैंड स्वीडेन नॉर्वे इटली केही भी ए प्रकार प्रस्ताव रे राजी नुह दैट इज व्हाई देयर इज अ डिबेट के वेदर यूएसए को छाड़िला परे वी कैन सपोर्ट द यूक्रेन तेणु से माने कहउचंती once in a generations for the Europe security right एबे यूरोप रो सिक्योरिटी पई एखाटी तो हवाउ पड़िबो जदि यूएसए न आसु बट आमे हमर छाड़िबा नाही एंड दैट इज व्हाई ए माने मध्ये एक कथा कहिसंती के वी विल प्रोवाइड यू मनी आमे मनी दबा यूक्रेन रो रीबिल्डिंग पई कारण जते क्षति हेछि ऑब्वियसली डैमेज a huge damage is been done by the Russia आमे कहबा ऑब्वियसली रशिया रो भी तो डैमेज हेछि तो सेथि पे ये माने शायद मोर जति मन पड़छि 500 ना 200 मिलियन कालिना परदिन सैंक्शन गोटे करछंती कि यूरोपियन एजेंसीज तो यूनियन पूरा तो राइट ये इशू पूरा मु तुमको डिस्कस कर देली कारण यूरोप जति यूक्रेन वाला टॉपिक को तमे डिटेल रे जाने पे चाहिबो यूट्यूब रे सर्च कर दो मोर गोटे वीडियोस अछि ताकू डिटेल से तमे जानि परिबो यूरोप सेबे जेबे तमर वार स्टार्ट हेइतला मु डिटेल रे गोटे बनै कि रखिछि देखि परिबो राइट बाकी विदिस बाकी ऑफर चली देखी पार जो महाकुंभ ऑफर आउ ना एटा तो खत्म हो जाइए बट यू कैन यूज माय कोड SHLIB टू गेट द व्हाट आम कह डिस्काउंट्स जोटा रही प्री एंड मेन्स कॉम्बो बैच चली बैच 2 मध्य चली दीज आर द नंबर ऑफ बैचेस चली राइट नंबर ऑफ बैचेस रही आमर जोटा एनरोल करेंगे एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस अपार्ट फ्रॉम दैट ये सब बैचेस रही राइट सो विथ दिस वी विल एंड द टुडे सेशन थैंक यू एवरीवन जो पीडीएफ रहा तुम मानकर पीडीएफ जो आम डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स देयर इज अ लिंक रही से लिंक रे जाइए तुम पीडीएफ पाई परिबो एंड प्लेलिस्ट पूरा तुम प्लेलिस्ट रही तो प्लेलिस्ट मध्य तुम देखि परिबो जो माने आगुरु सपोज देखि ना बा कंटिन्यूअसली मॉनिटर करि पारु ना हो सो यू कैन डू व्हाट तुम माने एया करि परिबो कि आमे किछि जो प्लेलिस्ट को देखिदेले हिजबो पीडीएफ सेठी मिली छ तुमको फ्री ग्रुप गोटे अछि से फ्री ग्रुप रे पीडीएफ टा मिली छ ओके तो से सेठू पीडीएफ टा देखिदेले बेटर रहिबो।